वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज मिलकर फिर कुछ क्रिएटिव करते हैं। वीडियो रिलेटेड मटेरियल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम ब्लैंक कंटेनर का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। हमने एक कंटेनर लिया है और हम थोड़ा सा फेविकॉल में वाटर मिक्स करेंगे और टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके कंटेनर को फिल करेंगे। फेविकॉल की हेल्प से कंटेनर को टिश्यू पेपर से फिल करना है, जिससे हमारा पेंट अच्छे से कवर हो जाए बॉक्स पर। टिश्यू पेपर को ड्राई होने के बाद हम इस पर पेंट करेंगे। एंड अभी हम क्ले का यूज़ कर रहे हैं। क्ले को हम ऊपर सर्कल पर लगाएंगे, जिससे बॉक्स के किनारे हाथ में ना लगे। क्ले लेंगे और क्ले की हेल्प से फ्लावर के लिए लीव्स बनाएंगे। हम सनफ्लावर लीव्स बनाएंगे। आप जो भी फ्लावर रेडी करना चाहते हैं उसकी लीव्स बना सकते हैं। मैं यहाँ सनफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। फ्लावर ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे, जितने भी हमें रिक्वायर्ड होंगे। हम एक क्ले की स्ट्रिप लेके सर्कल को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पेंट हमको क्ले एंड टिश्यू पेपर ड्राई होने के बाद ही करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ब्लू कलर का यूज़ किया है, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। हम पेंट को ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हमने पॉप स्टिक ली है। पॉप स्टिक को ऊपर कॉर्नर पे से दोनों साइड से कट करेंगे और कंटेनर पर अप्लाई करेंगे। स्टिक की लेंथ हम कंटेनर के अकॉर्डिंग लेंगे। स्टिक को सर्कल में लगा देंगे।
अपने रेडी किए हुए फ्लावर्स एंड लीव्स को अरेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ ना करें, यहाँ पे हमें फेविकोल यूज़ करना है। बिकॉज क्ले ठंडी होती है तो एकदम से हमारा ग्लू हार्ड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे फेविकोल का यूज़ करेंगे। फ्लावर्स ड्राई होने के बाद मैंने पेंट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाने के लिए एक फ्लावर और लीव्स पेंट करूंगी। फ्रेंड्स, हर स्टेप को हमें जब भी करना है जब एक स्टेप ड्राई हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे सनफ्लावर पे येलो कलर यूज करेंगे एंड लीव्स पर ग्रीन कलर। फ्लावर्स और लीव्स पे कलर हो गया है। अब हमें इसे ड्राई होने के लिए 1 डे रखना है। फ्रेंड्स, इसे एयर ड्राई ही होने दें, सन ड्राई ना करें। हमारा वॉश रेडी है। अब हम एक रिबन लेंगे और रिबन को ऊपर फ्रंट कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक कंटेनर यूज करके एक हमने वॉश रेडी कर लिया है। हम इसे एक एज ए ऑर्गेनाइजर भी यूज करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। होप यू लाइक इट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।